Hello everyone, welcome to English Treasure. In today's lecture, we're going to talk about how to write resume for every job applicant. It's very important how to write a catchy resume. What are the tips and tricks we should use while writing resume? So let's talk about it. The first one is contact information. The first and foremost, when you're writing resume, first of all, you must add your contact information. What are the things you must add? First of all, include your full name. Some people commit the mistake that they write their just first name, their last name. First of all, you must write your full name. After that, your phone number, your email address. While writing your email address, one thing you must note that your email id your id must be of professional. Your email id is very professional. It should not be like vjing VJ or something which is out of the context, out of the box. So make a professional email ID before you are making your resume. And then if you have a LinkedIn profile, of obviously you are making resume, so it's must task, make a LinkedIn profile if you haven't, and just add your LinkedIn profile in your resume if applicable. The next step you must follow is use a professional email address as I told you earlier. Then ऑब्जेक्टिव और समरी. फॉर इंस्टेंस अगर आप कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, वट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट जॉब, वाई डू यू वॉन्ट दैट जॉब. इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि आप अपना ऑब्जेक्टिव बताओ, लेकिन अगर आप मेंशन करना चाहो तो इट्स मेक योर रेज्यूमे अप टू अ नेक्स्ट लेवल. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव और गिव अ शॉर्ट समरी. सो कि आपके पास ऐसी कौन सी अबिलिटी और कैपेबिलिटीज़ है कि आप उस जॉब के लिए वो अप्लाई भी कर सकते हो, एंड व्हाट इज़ योर मेन ऑब्जेक्टिव टू apply for that job. Optional but can be helpful if tailored to the specific job. अगर आप कोई specific job के लिए mention करते हो. And briefly state your career goals. Like आपका कोई career goal है, for that your objective is to get this job, so you can attain some आप उससे कुछ नॉलेज, अपनी जो नॉलेज है उसके अंदर डाल सको. एंड हाईलाइट योर की क्वालिफिकेशन सो दैट कि जो रिक्रूटर है तो वो अंडरस्टैंड कर पाए कि ये क्वालिफिकेशन के साथ ये आपका ऑब्जेक्टिव अच्छे से जस्टिफाई कर रहा है. द नेक्स्ट स्टेप यू मस्ट रिमेंबर वाइल राइटिंग योर रिज्यूमे इज योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. वॉट इज़ योर एक्सपीरियंस. देखो इसमें दो चीज़ें होती हैं. इफ़ यू हैव द एक्सपीरियंस, यू हैव टू मेंशन दैट कि आपने कौन सी कंपनी में जॉब किया, वेयर इज़ द लोकेशन ऑफ दैट, व्हाट इज़ द कंपनी नेम, व्हाट आर योर लाइक ऑन विच प्लेटफॉर्म यू आर वर्किंग ओवर देयर. तो आपको सब चीज़ें मेंशन करनी होगी इन योर एक्सपीरियंस. एंड इफ़ यू हैवेंट पास्ट एक्सपीरियंस, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेल्स आते हैं कि वी हैवेंट पास्ट एक्सपीरियंस, सो व्हाट टू मेंशन इन आवर resume regarding experience. So you can mention about any particular thing you have experienced in your past, in your schools, in your college days. सो अगर आपने कॉलेज में कोई भी चीज़ हैंडल करी है, सो यू कैन राइट डाउन द एक्सपीरियंस कि मैंने इस तरह से बहुत प्रेशर को हैंडल करा था. आई ऑर्गेनाइज दिस एंड दैट सेमिनार इन माई कॉलेज, और मैंने एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करा था. आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट, तो मैंने उसको हैंडल करा. सो आई हैव अ एक्सपीरियंस, वेल एक्सपीरियंस ऑफ दैट, वॉट आर द प्रॉब्लम्स आई हैव फेस्ड, एंड उससे मेरे को क्या, मैंने उसको बेनिफिट दिया. So let's talk about professional experience. If you have that, so what things you must mention in your professional experience is use reverse chronological order. आप chronological order में लिखेंगे. उसमें आप कंपनी का नेम, लोकेशन, योर जॉब टाइटल, ओके, किस प्लेटफॉर्म पे आप वहाँ पे काम कर रहे थे, एंड डेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट व्हेन यू हैव स्टार्टेड योर जॉब ओवर देयर एंड व्हेन यू हैव क्विट देयर. So use bullet points to describe your responsibilities. What are the responsibilities you are handling in that and that company, and your achievements over there. What you have achieved, need to mention. Quantify your achievements whenever possible. For instance, you can say that I managed work over there which increased the sale by 20%. रिमेंबर वन थिंग कि आपको अपनी अचीवमेंट्स को इस तरीके से बताना है कि आई वॉज वर्किंग ओवर देयर फॉर पास्ट 4 years. दैट्स इट. नहीं, आई मैनेज अ टीम ऑफ 10 विच इंक्रीज द सेल्स बाय 20%. ओके, मैंने 10% की वो करी जिससे उनकी एबिलिटी ऐसे से निखर कर आई. सो यू नीड टू मेंशन योर एक्सपीरियंस इन दिस वे.
important you must remember is your education. When you're mentioning your education in your resume, remember that you need to write down the name of the institution. For instance, you have done your masters and bachelors from dash and dash degree, तो आपने क्या करना है, you have to write down the institution name from which university you have done your degree, what are the degrees you earned, and graduation date, and any relevant honors you have done. So you need to mention in your resume. The next is include your GPA if it is strong, and if you are a recent graduate. So if you have accomplished your graduation or masters, you need to mention your GPA, like what are the overall grade, A plus, B, A. So you need to mention in your resume. The next is skills. Skills and experience is very important. I am telling you, when you are making your resume, so work on your experience and skills. Use that sort of words, that the recruiter wants something, so he can add some catchy lines in it. So in the skills, highlight both technical and soft skills. If you have technical skills, obviously gonna mention that, but if you have soft skills like good communication skills or anything else, you need to mention that relevant, which is relevant to that job. Okay, the next one is use keywords from the job description to pass through ATS. So if you need to pass ATS, what's that? That is applicant tracking system. So you need to mention the keywords in your resume, because it's very hard task for the recruiters to go through that much resumes every day. So what they do, they take the help of ATS, and इसमें you need to mention कि अगर आपने इस जॉब के लिए अप्लाई करा है, तो आपको जॉब टाइटल जो आप लिख रहे हो इसके अंदर जो कीवर्ड्स आप मेंशन करो, उससे वो स्कैन करके, ठीक है, रिज्यूमे को अलग अलग चीज़ों में क्वांटिफाई करते हैं कि ये जॉब एप्लीकेंट्स इस चीज़ के लिए हम हायर कर सकते हैं, इसको इसके लिए. सो द हायरिंग प्रोसेस इज वेरी मच फास्टर आफ्टर कमिंग फ्रॉम दिस ATS. सो रिमेंबर वन थिंग कि जब भी आप रेज्यूमे बना रहे हो, इन योर स्किल्स मेंशन द की वर्ड्स विच इज़ वेरी हाईलाइटेड, और आप अपना जॉब टाइटल जो है, जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसको बड़े ही ध्यान से लिखें. So the next is achievements. What are the achievements you have, you got in the previous? Highlight any award or any recognition from your university, from your school, college, or significant accomplishments. Whatever the accomplishments you have, so you must mention in your resume. The next is keywords. Keywords are very important when you are writing your job description. So the keywords you are mentioning, like managing, achieved, managed, or something. So use these sort of keywords. The next is formatting. जब भी आप अपना resume लिख रहे हो, your format, keep your resume clean and easy to read, so that it can be read by everyone. Remember one thing, जब भी आप अपना resume सेंड कर रहे हो, भेज रहे हो विद द PDF और लाइक इन द हार्ड कॉपी, रिमेंबर वन थिंग, उसको एक बार दोबारा रीड ज़रूर करना. नेवर एवर कमिट सम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और एनी एरर, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट फेस ऑफ योर्स इन फ्रंट ऑफ द रिक्रूटर. सो नेवर कमिट द मिस्टेक ऑफ ग्रामेटिकल एरर or any such errors. Use a professional font. The font you are using in that must be of Arial, and stick to a consistent format. Okay. The next is length, which is very important. कई लोग सोचते हैं कि अगर हम बहुत बड़ा resume बनाएंगे, like 2 to 3 page, it would be a more eye catching or something. It's very wrong. Remember one thing कि resume हमेशा 1 page का ही होता है. It's a CV that is of 2 to 3 page. CV curriculum vitae that is of 3 page or 2 page, and resume is only of 1 page. Okay, aim for 1 page of resume for less experienced candidates and 2 pages for those जिसका experience बहुत ज़्यादा हो. Then you can only go through with 2 pages, otherwise length would be of 1 page. In the last note, tailor for each job. For instance, customize your resume for each job application. For instance, you are applying for 2 to 3 jobs, so you must be customize your resume accordingly. Focus on the most relevant experience and skills. You need to mention your experience and skills regardingly. Last but not least, use action words. जब भी आप अपना resume बना रहे हैं, उसमें कुछ actions verbs डालिए. For instance, कि managed, I managed a team of 10, I achieved dash and dash,
ओके आई accomplished. ओके आई accomplished, मैंने ये चीज़ें करी. स्टार्ट ईच बुलेट पॉइंट विद स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ब, मैनेज्ड, अचीव्ड, accomplished, टू डिस्क्राइब योर accomplishments. आपने जो भी करा उसको बताने के लिए यूज सम एक्शन वर्ब्स, तो आपका रिज्यूमे बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग और हाईलाइटेड लगे. Typing resume, remember these tips and tricks, and if you like it then don't forget to like, subscribe and share my channel. And if you have any sort of query then ask me in the comment.